morning, children. So, once again, we are meeting in a revision lecture. That is lecture number 5. Okay? Today is our 5th revision lecture. What is the name? Third chapter. Right? Third chapter. Achha, what is the name of the chapter? Indian Constitution. Right? Indian Constitution is the name of our chapter. Now, let us say, what is meant by Constitution? This is the first question. See, already I have written over here. What is meant by Constitution? Constitution को क्या बोलते हैं? संविधान. अच्छा, ये मैं आपको जो क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, what is meant by Constitution, उसके पहले हम थोड़ा बेस बना रहे हैं. Now see children, what is meant by Constitution? Let me say, a Constitution means a written or oral document. Basically, it is not oral document, a written document on which a country governs, on which government works. And basically, in 21st century, almost each and every nations of the world are democratic nations. And you know what is the principle of democracy? Of the people, for the people, by the people. Understood? This is the fundamental base of democracy. जैसे हमारे घर पे टिपाई होती है, आप 4 लेग्स काट लोगे, हम 3 लेग्स की बात कर रहे हैं. 3 लेग्स पे भी टिपोई आती है. टिपोई का असली नाम 3 लेग्स पे खड़े रहने वाला इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हमने बैलेंस के लिए 4 बना दिया है. हम 4 की बात नहीं कर रहे, हम 3 की बात कर रहे हैं. राइट? सपोज टेक फॉर एग्जांपल, आई एम throwing a टिपोई over here. Right? 1 leg, 2 leg and 3 leg. Now on this, a टिपोई stands. ऐसा करते ना? And don't laugh because I am not putting drawing. Right? ये जैसे हमारा एक टिपोई है, तो ये तीनों लेग्स पे ये टिपोई खड़ी रहती है. है समझ में? ओके. तो अगर मान लो इन 3 लेग्स में से एक लेग हम निकाल दें, मान लो एक लेग टूट गया, तो पूरी टिपोई नीचे आएगी. है समझ में? नाउ लेट अस bifurcate. The flat portion on the teapot, I will say it is Constitution. Constitution. This part. It is called as Constitution. Right? Now I will name all 4 legs. It will be of the people. It will be of the people. इसको मैंने नाम दिया by the people. इसको मैंने क्या नाम दिया? by the people. और इसको नाम दिया for the people. तीनों लेग्स हो गए, of the people, for the people, by the people. अच्छा, इन तीनों लेग्स में से अगर एक लेग निकालो तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा वो नीचे आएगा, टिपोई टूट जाएगी. वैसे हमारा संविधान इन तीनों में से एक भी लेग अगर टूट गया तो वो गिर के नीचे आएगा. दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ ग्राफिकल मैथड. नाउ लेट अस सी why there is a need of Constitution. As I told you, we are living in 21st century. Each and every nation, almost today in the world, except few nations, they are democratic nations. They are republic nations. You know, 5 to 7 nations, some of them are having monarchical system, but they are very small. Some African nations,
Some other nations are in communist government. Take for example North Korea. China was a communist government. Still it is communist government, but it has taken the role of capitalism. उसकी सरकार कम्युनिस्ट है, लेकिन लिबर्टी लोगों को दे दी है रिपब्लिक की तरह, डेमोक्रेसी की तरह। और उसकी हम बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। तो मान लो why there was a need of constitution? So because when India became free in 1947, understood? When we became free in 1947, समझाई चले, right? जो मैं बोलता हूँ समझ में आता है ना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, good. I am asking to you. तो 1947 में जब आजादी आई, तो उसके पहले हमारा एक ही टारगेट था। मैंने आपको सारे लेसन्स में पढ़ा है, ऐसा ये घटना हुई थी, ये घटना हुई थी, ये घटना हुई थी, बराबर है? तो उस वक्त एक ही हमारा टारगेट था, भारत माता की आजादी। बच्चा जब समझने लगते थे, तब जाके उसके मन में आजादी के कलर उभरने लगते थे। आपकी उम्र के बच्चे भी आजादी की जंग लड़ रहे थे इस वक्त, ऐसा। अच्छा, now everything over. So now, when we became free from British clutches, that is called foreign rule, a huge nation with multiple diversity, multiple languages, caste, creed, culture, religion, traditions, customs, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। Now, how to govern all these things? And that is why India is called land of unity in diversity. मैं आपको एक बात बता दूं, when you reach in 12th standard, a very famous writer has written a lesson. I am making these children to study in 12th standard, as I am taking English as well. We have a very second lesson of a famous writer called Ruskin Bond. Right? Writer का नाम क्या है? Ruskin Bond. And he is a writer of children. Possibly in primary standards you have to study Ruskin Bond. He has written a book called A Room Under a Roof. A room under a roof. इसका मतलब क्या होगा? रूफ माने छत, छत के नीचे एक रूम। मान लो एक मकान है बड़ा वाला, उसकी छत तो अलग ही होती है, मान लो 10, 15, 20 रूम लगे हैं, उसमें से एक रूम ऐसा है जिसको हिंदुस्तान बोलते हैं, जिसको इंडिया बोलते हैं, राइट? मान लो ये हमारा मकान है, तो इसके नीचे जो रूम बनाए गए हैं, बराबर, ऐसे कई सारे रूम्स हैं, तो पॉसिबली एक रूम ऐसा है कि जहां सबको मान्यता मिलती है, सबको इक्वालिटी मिलती है, सबको जस्टिस मिलता है। शायद यहाँ नहीं मिलता, शायद यहाँ नहीं मिलता, शायद यहाँ नहीं मिलता। That means these are all different nations. There is only one nation in world which we call India, which gets equality to all. A room under a roof. And that novel was published by him at the age of 90. If you study Ruskin Bond, मैं अपने टॉपिक पे हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। When India became independent, he was supposed to go to England
Let me share one short story with you. His father was working with a very high post in military of British government. Now India became independent, so choices were offered उन लोग के लिए कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है आप हिंदुस्तान रहो, वरना आप अपने देश चले जाओ। 1946 में उसके फादर की डेथ हो गई और उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल थी। तो इंग्लैंड में उसके चाचा चाची रहते थे। मदर ने रीमैरिज करके इसको छोड़ दिया ऐसे। So there was no one for him in India. He was born in England, but he was brought up in India. उसकी जन्मभूमि इंग्लैंड थी, लेकिन कर्मभूमि हिंदुस्तान थी, देहरादून। उसकी पढ़ाई लिखाई सब उधर हुई ब्रिटिश शासन में। तब जाके आजादी आ गई और उसको वापस जाना पड़ा चाचा चाची के वहां। 3 साल में वो वापस आ गए हिंदुस्तान। A very beautiful lesson. 3 साल उसने कैसे गुजारे उधर, वो एक एक एनिग्मा, नॉस्टैल्जिया एक एक लाइन में लिखा है। That shows our culture. A striking comparison between East and West. Understood? हमारे इधर इंसानियत है, मानवता है, बराबर फीलिंग्स है, लव है, कंपैशन है। उधर ऐसा कुछ नहीं, गिव एंड टेक। उधर उसके चाचा चाची के साथ भी इतने खराब रिश्ते हुए। एक दिन उसने ठान ली, वो घर से भाग गए, किसी को बताया भी था कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं। अब इसका कोई इधर नहीं था। उसने ऐसे मन में ठान लिया कि वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, कि चलो मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा, राइटिंग मेरा पैशन है, मैं उधर के लिखूंगा और अपनी रोजी रोटी के लिए छोटी सी नौकरी कर लूंगा एज ए टीचर। Taking all this clue in his mind, he escaped from London. He came back to India. And from India, means at that time, shipping was there. From London, he came to Mumbai. And from Mumbai, he went to Dehradun, his native place. Right? And it is said like that. When he returned back in 1951 from England, he went back to England in 1982 at the death of his mother. उस वक्त तक वो इंग्लैंड नहीं गए। When in 1982 his mother died, to perform the rituals, he went to England. Again, once again he came back. See, this is the culture of India. This is how the people of India react. India is a land of cultural unity. And as I told you children once in my opening lectures, the maximum festivals which you find in India is nowhere found in world. You can calculate yourself. What is the annual average of total days in a year? 365. Right? We are having 365 days. 365 days. Right in a year. Am I right or wrong? Then if you calculate the festivals which we celebrate according to different culture is almost 37. I am talking about prime days. मैं आपको भी गिनती भी कराऊंगा। अच्छा, if you divide this by 37, it comes approximately 9.65 days. मतलब हर 10वें दिन हिंदुस्तान में फेस्टिवल होता है। बताओ मेरे को एक कल्चर ऐसा
10वें दिन हिंदुस्तान में एक फेस्टिवल होता है, समझ में? If you study, it is unfortunate to say. I will tell you how it goes on. Take for example, we'll study Gujarati month, compare it to English month. From Diwali to Diwali we will study. Take for example, हमारे इधर फेस्टिवल की सीजन कहाँ से शुरू होती है? आपको मालूम होगा, रथ यात्रा से। मैं आपको गुजराती मंथ बताऊंगा, विक्रम संवत का नाम, और गुजराती विक्रम संवत कैलेंडर। अच्छा, आषाढ़ी बीज जिसे हम रथ यात्रा, जगन्नाथ की रथ यात्रा बोलते हैं, वो कौन सा दिन है? आषाढ़ शुद्ध बीज, बराबर? आषाढ़ महीना, सावन का जो महीना होता है, ड्राई मंथ ऑफ मॉनसून, वो एक। उसके 10-12 दिन बाद, मतलब 11 छोटी लड़कियों का, शायद आपने भी वो व्रत किया होगा जिसे मोड़ा करके बोलते हैं, ज्वारे उगाते हैं ऐसे, जिंदगी की अगली खुशी के लिए ऐसे सब। आई डोंट नो दैट, बट स्मॉल लिटिल वंस आर सेलिब्रेटिंग। आई हैव सीन 5 days हुआ, फिर आषाढ़ महीने का 15 दिन चला गया, उसमें बड़े लोग का, मीन्स ग्रोन अप लेडीज, मैरिड लेडीज का व्रत आता है, जिसको एवं जीवन बोलते हैं, दिवासा अमावस्या। उसके बाद हमारी हिंदू संस्कृति का, इंडियन कल्चर का प्राइम मंथ आता है, जब ये चल रहा है, मंथ ऑफ श्रावण, होल मंथ फेस्टिवल। And see, there is a great pomp and luxury in month of Shravan. Environment, atmosphere everywhere. Festival starts from Shravan. Whole month of Shravan you calculate. Then falls Bhadrava. See our culture. We have not forget our older ones. We have not forget our ancestors. We are not enjoying. We are also remembering these people who are already dead. श्राद्ध का 15 दिन आता है, हम उसको भी याद करते हैं, राइट? आपके घर में भी ऐसी तिथि आती होगी, कोई बड़े का जो डेथ हो गया होगा, शायद एकम होती है, बीज होती है, तीज होती है, तो उस वक्त हम उसको याद करते हैं, कुछ रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो करते हैं। 15 days, then 4 days holiday, 1 शुद्ध और वध दोनों में है। On the very 4th day of second part of Bhadrava, there is establishment of Ganpati, 11 days. And what is Ganpati Utsav? Everyone knows. Whole Bhadrava went eliminating just 4 days, Shravan and Bhadrava. Then falls a month of Asha. First 10 days, Navratri plus Dashera. 9 nights of Navratri and Dashera. 4 days break. On the 15th day, it is Sharad Purnima. Once again, 10 days break. From 11th, that is called Agyaras, 11th day. Festival of Diwali starts. Agyaras, Vagbaras, Dhanteras, Kali Chaudash, Diwali, New Year, Bhai Dooj, Kevda Teej, चौथ का ब्रेक होता है और लाभ पांचवा, 10 days festival. Month of Kartik. Then again 5 days goes. Then finally we have Tulsi Diwali, Dev Diwali, 11 को. फिर ब्रेक आता है, फिर जाके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिसमस एंड ऑल दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कल्चर। फिर जाके उत्तरायण का फेस्टिवल आता है, फिर थोड़ा लंबा ब्रेक आता है, फिर जाके हनुमान जयंती, शिवरात्रि आती है, रामनवमी आती है अप्रैल में,
फिर अप्रैल में जो चैत्र मास बोलते हैं वो भी एक फेस्टिवल जैसा माहौल होता है, क्योंकि सारी जगह चैत्र मास में रिलीजियस एक्टिविटी होती है, कथा रामायण महाभारत सब कुछ जो हमारे एंसेस्टर्स गुजर गए हैं, जो कथा वथा जो करते हैं, मैक्सिमम दिस कथा आर डन इन चैत्र मास। उसको हम पितृ का महीना बोलते हैं, चैत्र मास। शायद आपके घर में भी कभी हुआ होगा, if we are going for any katha or some religious rituals behind our ancestors, the best month is Chaitra Mas. Now you tell me, children, out of 12 months, we are enjoying festival for 7 months. Whole Shravan, Bhadrava, Aso, half Kartik, Chaitra. Then starting from Ashar. From Ashar, festival starts. It ends up to Kartik. Ashar, Shravan, Bhadrava, Aso, Kartika. 5.5 months. Some festivals. बताओ मेरे को एक वर्ड में ऐसा कल्चर जहां इतने सारे फेस्टिवल्स है, इतना सारा, and that is why it is said a room under a roof. इतनी multiple diversity. See, I have not mentioned Vaisakhi and Onam and Pongal and all that. I have talked about general festivals. And if you calculate Raksha Bandhan, if you calculate Eid, if you calculate Janmashtami, if you calculate Holi, that comes to 37 holidays. Divide by 365, we get an answer of 9.65. पूरे 10वें दिन फेस्टिवल का दिवस होता है, हर 10वें दिन एवरेज. That is our culture. Understood? That is our culture. We are fed up of studying all these things. British आए, उनके ऐसा किया, वो राजा ऐसा था, वो लूट गए, चले गए, चला गया, क्या है? What is lost is lost. Why not take over that lost? हमारे पास क्या है वो तो हमें सोचना पड़ेगा ना. गया, जाने दो. अब नया क्या करने का? And because of this, India has a unique identity in the world today. And I am not talking about India. Wherever Indians have settled, these all festivals are celebrated there. Just now, in this vacation time, I was watching the Navratri on some YouTube videos rather, which was performed last year in Glasgow, Leicester and Bristol. There are three cities I was watching Navratri perform there. You will not find that this Navratri is celebrated in England. उनको हिंदुस्तान का ही माहौल लगता है, जैसे हम इंडिया में नवरात्रि सेलिब्रेट करें. But a very beautiful Navratri of Glasgow. Very beautiful Navratri. जैसे हमारे इधर होता है वैसी तरह. ऐसा नहीं. Diwali is celebrated with great pomp and luxury in Western countries rather than in India. Because Indians are spread everywhere in the world. And wherever we go, we take our culture with it. Possibly you will also go abroad tomorrow. Will you forget your culture? Never forget. You will also remember your culture. You will also remember your festival. Wherever you go, you will celebrate these festivals. That's much. So, this is how we have propagated our culture. And mingling of all this culture, getting all the people under one roof, it is not an easy task. सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी कल्चर के लोग, सभी ट्रेडिशन में मानने वाले लोगों को इकट्ठा एकजुट लाके एक ऐसा संविधान बनाना था ताकि किसी को अन्याय ना हो और किसी को ऐसा नहीं लगे कि इसको ज्यादा मिल गया. It was not an easy task. And that is why
The novel of Ruskin Bond has a very good title, A Room Under a Roof. आप हमारा पूरा इतिहास चेक कर लो. You have studied history up to 8th standard, you are still studying. From time to time, you will study. फलाना किंग ने इधर ये समय आक्रमण किया, फलानी कम्युनिटी इधर से आई, इधर हमला किया. Have you ever studied our history? The Indian kings have abated our territory and attacked abroad. Have you ever studied? You will not find. Understood? You will not find. कभी हमारी हिस्ट्री में मैंने तो नहीं पढ़ा है किसी बच्चे को कि सम्राट अशोक ने बर्मा पे हमला किया था, अपनी हिंदुस्तान की सरहदें पार करके ईरान पे हमला किया था. और जो लोग इधर आए, there was a clash internally at the first stage. They became Indians. They were impressed by our culture. They forgot their own and they became Indians. ये मैं नहीं बोल रहा, इतिहास बोल रहा है. Whoever came to India, they were Indianized. And that is the legacy of our culture. And we are proud of our culture. We are proud of our culture. We should be. Because no culture can match Indian culture, even thousands of kilometers away. आप मेरे को एक संस्कृति ऐसी बताओ, अभी मैंने तो आपको पूरे दिन गिना दिए, आप मेरे को एक संस्कृति ऐसी बताओ चलो जो हमारे कल्चर को मैच कर सकती है. I am not against any religion or any culture, but at the same time I am proud of my culture. वो तो होना ही है. I am proud of my culture. And connecting all this culture was a constitutional thing. So coming back to our topic, you will study all these things in 10th standard. 8th और 9th का मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, इसमें बिल्कुल बकवास है. एक ही कैसेट बजा दे 5 साल से. वास्को आया इंडिया, वास्को आया इंडिया, वास्को आया इंडिया, ये हुआ. कौन वाली सिंगर आया था, वायरस सिंगर आया था. पिछले लेक्चर में ऐसे मैंने आपको बताया है. लॉर्ड वेलेस्ली, सब्सिडियरी लैंड सिस्टम, बराबर है. चलो मैंने आपको झूठ बताया है. Because I have gone through all the histories of world. बहुत पढ़ाई की है, बहुत पढ़ा हूं मैं. I have seen all these things. जो वेलेस्ली इधर आके पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, 70% of हिंदुस्तान. When did he came to India? 1798. I repeat the date. 1798 में हिंदुस्तान हुआ है. When did America become independent? In 1773. मैं आपको बताता हूँ. Let us talk about that. Right? In 1773, US became independent. When did Wellesley came to India? 1798. That is part of 25 years. When this American War of Independence is called 7 years. उसकी आज़ादी की जंग 7 साल चली थी. जंग 66 में शुरू हुई थी ब्रिटेन और अमेरिका के बीच, मदर कंट्री और अमेरिकन कॉलोनीज के बीच. अब उसका इतिहास पढ़ो. 7 साल में अमेरिका आज़ाद हो गया. और जिसके नाम से, जैसे हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, जिसके नाम से आज अमेरिकन कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, was the commander in chief of American forces, George Washington. वो सेनापति थे और उसकी अगुवाई में अमेरिका आजाद हुआ. तो आज उसका कैपिटल का नाम क्या है? वॉशिंगटन डीसी.
ब्रिटिश सेनापति था वेलेस्ली, भागना पड़ा था। He was supposed to surrender against American forces, and that same bloody Wellesley became the Governor General of Wellesley. मैं बार बार बोल रहा हूं ना, वो लोग होशियार नहीं थे, हम मूर्ख थे। जो वेलेस्ली को उस वक्त अमेरिका की कितनी कॉलोनीज ने आजादी की जंग लड़ी थी? 20 कॉलोनीज। 20 कॉलोनीज ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, एंड दे फॉट ब्रेवली। हाँ, फ्रेंच लोग ने उसको मदद की थी, फायर, ग्राबिंग, डुप्लेक्स, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटेन के दोनों की राइवलरी थी। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, वो इक्वेशन चलता है। फ्रेंच लोग ने भरपूर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मदद की थी। लेकिन जिसको हम लॉर्ड वेलेस्ली बोलते हैं, वो लॉर्ड को उधर से भागना बहुत महंगा पड़ा था। He was back to England. After a passage of 25 years, he came to India and he became the Governor General of India. And at that time, the great kings. मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, इन सिंधियास, होलकर्स, मराठास, and Valaris, Rajputs, many others. They all came under his influence. इसलिए मैं बार बार पहले भी बोला था, अभी भी मैं वापस बोल रहा हूँ अपना स्टेटमेंट, वो लोग होशियार नहीं थे, हम मूर्ख थे। जो 20 कॉलोनीज के मुट्ठीभर आर्मी ने वेलेस्ली को भगाया, वो वेलेस्ली हिंदुस्तान का राजा कैसे बन सकता है? इट इज नॉट स्ट्रेट पॉसिबल, बट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश टैक्टिक्स, डिवाइड एंड रूल, वी आर सेइंग डिवाइड एंड रूल, ओके। वो डिवीजन करना चाहते थे, लेकिन हमारी बुद्धि घास चलने कर गई थी उस वक्त। हमको क्या पता नहीं चलता कि भाई ये क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, उस वक्त नहीं सोचना चाहिए था। समझ, but that is a past history, lots of mistakes, but still we are studying that history. British came to India, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने लॉर्ड एलर्स ने ये किया, इसने ये किया, कॉर्नवालिस ने वो किया, हेस्टिंग ने वो किया। Half truth with half lies. Understood? ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स जो कहीं भी नहीं चले थे, वो हिंदुस्तान में सुपर हिट हो गए थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त इंडिया वॉज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल पीसेस। और मैंने रेगुलर लेक्चर में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मैंने आपको बताया था, वापिस मैं आपको बता रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दिस नेशनल मूवमेंट्स, बट इफ यू स्टडी नेशनल मूवमेंट्स इन सिंगुलर पैटर्न, यू विल बी रॉन्ग। बट इफ यू वॉच फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों आंख से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मैंने उस वक्त भी बोला था, आज भी मैं वापस बोल रहा हूं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उस वक्त भी मेरा स्टेटमेंट यही था कि कोई जगदीशपुर के लिए लड़े, कोई दिल्ली के लिए लड़े, कोई झांसी के लिए लड़े, दे आर अप्रिशिएबल, राइट? कोई ग्वालियर के लिए लड़े, कोई पूना के लिए लड़े, कोई हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ा था, इसीलिए हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली। सिंपल। अगर वो लोग इंडिया के लिए लड़ते ना, तो हमारा हिंदुस्तान 1857 में आजाद हो गया होता। एंड दिस was the advantage to British. ये परिस्थिति का पूरा उन लोग ने फायदा उठाया और 200-300 साल तक लूटने का मौका दिया हमने उसे, बिकॉज ऑफ डिसयूनिटी। समझ में? अगर 1857 का रिवॉल्ट इंडिया का रिवॉल्ट होता तो इंडिया कब का आजाद हो गया होता? रिवॉल्ट 1857 था, इंडिया का रिवॉल्ट नहीं था। और फिर जाकर रिवॉल्ट बना तो
57 में क्यों हिंदुस्तान आजाद हो गया? That is to be said. So we are coming back to our culture. That was basically a revision one, but I explained you a lot except revision. So governing all this country, there was a need of a written document. और बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, 1930 में, जिससे हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, वो आप 9th में पढ़ोगे. मोतीलाल नेहरू drafted such a very beautiful report which was presented to British government. At that time, this report was not accepted, and in evidence of this acceptance, 26 January 1930 was celebrated as first Independence Day. And that is why we are celebrating 26 January as a Republic Day. Because 26 January 1930 was our first Independence Day, on which we have framed our constitution accepting the challenge of British government. 1928 में constitution लिखना शुरू हुआ, तो 30 में खत्म किया था, और हमने प्रेजेंट भी किया था, लेकिन at that time we were useless. अच्छा, बात चली गई, बात गई, फिर इंडिया आजाद हुआ 1947 में. That time, that constitution, some points from Irish constitution, from England, from America, from French Revolution, many good points were included in constitution. So, India can become the largest democratic nation of world. So, हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे से बड़ा चाइना है, लेकिन उधर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है. India is the largest democratic nation of the world today, handling 138 CR, 138 crore का देश. तो भी हम खाते हैं, मौज करते हैं, ऐसा नहीं. हाँ, there is some loopholes, there are some problems. I'm not ignoring that, but we have to tolerate. Right? But I can say, as per my knowledge, we are the best constitution in the world. And this constitution took 2 years, 11 months, and 13 days to follow. तकरीबन 3 साल लगे थे ये कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि सबको इकट्ठा करना था, सभी जाति, पाति, धर्म के लोग, सबको जस्टिफाई करना था. Not a single Indian should be left over. किसी एक हिंदुस्तान को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हुआ है हिंदुस्तान में, क्योंकि वो हमारी परंपरा नहीं है. ऐसा that is our legacy, because it is a land of Buddha, it is a land of Mahavir, it is a land of Ram, Krishna, जहाँ अन्याय नाम का कोई शब्द ही नहीं है. There is no place. अभी मैंने आपको बताया सम्राट अशोक कितने महान थे. चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा हिंदुस्तान जीता था, लेकिन वो बाउंड्री क्रॉस करके ईरान पे चढ़ाई नहीं की थी, अफगानिस्तान पे चढ़ाई नहीं की. He was limited to his nation. He was there to protect his boundaries. बस. कहीं हमारे इतिहास पढ़ा है, लूटपाट हमने कभी किसी से नहीं की, किसी का हमने छीना नहीं है. अभी भी आपको मदर आपको ये संस्कार देती है. That is our culture, because it is a constitutional culture. I am not talking about constitution, but still I am talking about constitution. अगर मान लो कि आपका एक लंच बॉक्स आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना पड़ा, and at home you complain, मम्मी यार नाश्ता बहुत कम था, मेरे फ्रेंड ने मेरे से शेयर किया, मैं भूखा रह गया, मैं भूखी रह गई. Your mother will never advise you कि बेटा एक साइड जाके नाश्ता कर लेने का, फ्रेंड को नहीं देने का. On the contrary, she will say कि बेटा कल से 2 बॉक्स ले जाना, अपने फ्रेंड को भी देना. That is our culture. Understood? That is our culture. You are never advised at home कि गुजराती में मुझे से बोलते हैं एकल पट्टू बन जाओ. We are never advised. We live all together. We enjoy our feelings and happiness together. We share our sorrows together. एक खुश है तो सब खुश है, एक नाराज है सब नाराज है.
that we call as a family system. And that is why in our constitution it is written, Vasudevam Kutumbakam. Whole world is a family. Understood? Whole world, I'll take more. I'll explain. Whole world is a family. तो फैमिली में छोटी मोटी नाराजगी होती है, लेकिन फैमिली मतलब फैमिली होता है. That was a great thing which I explained today, coming back to the topic. So, connecting all these virtues together, connecting all these things together, there was a need to frame one document which was termed as Constitution. Understood? So, I write my answer right there. I hope you understood this. Right? What is my definition? A systematic set of rules. A systematic set of rules. Set of rules and regulations. Rules and regulations for the people, and to run the government, of a nation, is called Constitution. Right? It's called Constitution. That means of the people, for the people, by the people. इसका technical meaning हुआ. Now my second question. Question number 2. How was Constitution framed? How was Constitution framed? How was Constitution framed? उसका जो आंसर है, मैं आपको इधर भी लिख देता हूं. उसका जो आंसर है, मैं इधर पढ़ूंगा. बराबर? Because it is not possible, because I have already written once. तो ये आंसर आपको मटेरियल में दिया गया है. From material. You may have to पढ़ के सुनाऊंगा, समझाऊंगा. From material you are supposed to get. और टेक्स्ट बुक में भी है और मटेरियल में भी है, दोनों में है. तो मेरा दूसरा सवाल, how was our constitution framed? So let us see formation of our constitution. The Constitution of India is a statement of national goals and aspirations of the people. Aspiration मतलब इच्छा है, जो मैंने आपको अभी समझाया. अभी हमारे रिकॉर्डिंग के वक्त तो ये भी सावन का महीना चल रहा है, जिसे हम श्रावण मत बोलते हैं. कितने ढेर सारे फेस्टिवल्स है, तो वो भी हमारी एस्पिरेशन है. मेरी भी एस्पिरेशन होती है कि मैं भी अपनी बहन के पास राखी बंधवाऊं. मेरी बहन की भी एस्पिरेशन होती है कि मैं मेरे भाई को आज कम खेल दूं. बराबर है, सारी एस्पिरेशन होती है. The Constituent Assembly was established. One new committee was established, which we call Constitution Assembly. It started working on 9th December, which is the date given over here. You might mention that date, 9th December. 9th December 1946. From this day, they started working. Right? The Constituent Assembly was formed by the prominent and distinguished leaders. I am talking about politicians of that time. I am not talking about this time. अभी ये politician ने बनाया होता तो हिंदुस्तान को बेच दिया होता. I am talking about that politicians, selfless, right?
The political vision and the foresight of the leaders like Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abul Kalam Azad, Shama Prasad Mukherjee, Sardar Baldev Singh provided a valuable guidance. ये लोग ने पूरे वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया, कल्चर का स्टडी किया, अभ्यास किया और फिर जाके ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जो मैंने 1 घंटा आपको समझाया। उस वक्त सबका स्टडी हुआ था, ऐसा समझ में everyone must be justified. Frank Anthony, underline this word. Frank Anthony was an Anglo-Indian community. गोवा बिल्कुल छोटा सा राज्य है। फ्रैंक एंथनी गोवा को रिप्रेजेंट करते थे। उसको भी इंडिया नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्रिश्चियंस आर फ्रॉम यूरोप, बट नाउ दे आर ऑल इंडियन, तो उसको भी न्याय बनता है, उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ता। और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था, he was फ्रैंक एंथनी। And H.P. Modi representing Parsi community. Now, a handful of Parsis left in India, but still they have their rights. बताओ मेरे को वर्ल्ड में ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको डेटा बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में अभी 2,67,000 पारसी लेफ्ट। अभी आज की मैं बात कर रहा हूं। Out of 138 crore people, there are not even 3 lakhs Parsis left, but still they are holding importance in constitution. बताओ मेरे को एक देश का ऐसा संविधान जो छोटी में से छोटी चीज का भी इतना ख्याल करते हैं। ऐसा समझ में, right? The committee of various constitution scholars like Adani Krishnaswamy, Dr. B.R. Ambedkar, and Kanayala Munshi. He was a Gujarati freedom fighter, a versatile writer also. Gujarati में आप पढ़ते होंगे Kanayala Munshi. He was also a freedom fighter, right? There was a female member, Sarojini Naidu, and Vijayalakshmi Pandit. ये सब आंसर में दिया गया है। Dr. Rajendra Prasad was elected as a president of Constitution Assembly. And chairman was Dr. B.R. Ambedkar, Bhimrao Ambedkar. Right? Total 166 meetings. 166 meetings. Right? 166 मीटिंग हुई थी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट नहीं लेने का है, एडिशन। For 2 years, 11 months and 18 days. 2 years, 11 months, 18 days. Almost 3 years more, right? This is the time slot for framing constitution. Right? And finally, on 26 November 1949, the committee was prepared for constitution implementation. But unfortunately, as I told you, we did not implement our constitution on 26 November because after 2 months, our first Independence Day was coming. That was 26 January 1930. In order to commemorate that day, remember that day, we have selected that day as a Republic Day after 20 years. When did India become Republic? 26 January 1950. When was the first Indian Independence Day celebrated? 21st January 1930. 20 साल के बाद इस दिन को अमर करने के लिए इसको रिपब्लिक डे चुना गया। There may be some questions. Why this odd figure was selected? 26 January, वो 1st January रख सकते थे, 1st February रख सकते थे, 15 January रख सकते थे। Why 26? Because 26 January was the first Independence Day. And to make it memorable, as far as India lives, now
and is celebrated as Republic Day. So am I clear, children? We have two set questions. What is meant by Constitution and framing of Constitution. Right? I hope you enjoyed this lecture. लेसन की वजह में आपको 9th 10th और उसके बाद का भी समझा दिया इसमें, है समझ में? Okay, now get ready for your homework now. How, sorry, how our Constitution was framed. अच्छा ये आंसर किसमें से लिखने का है? आंसर from material. पूरा पॉइंट वाइज दिया है, बराबर है? आपको मटेरियल में से पीडीएफ फाइल जो हम भेजते हैं फिजिकल मटेरियल उसमें से आपको लिखना है. So I am ending this lecture, children. Good day. Thank you.